Good afternoon and welcome to RCI's Navshikar channel. I welcome our viewers to our show today. Our topic of discussion for today is Principles of Teaching Language Techniques to Children with Hearing Impairment. And to discuss with us, today we have with us our expert, Mr. J.C. Gupta. He is a lecturer and assistant director of the Northern Regional Center of the Ali Yavar Jung National Institute for Hearing Handicapped. And you can contact him on his email ID, that is avinihhnrc@indiatimes.com. Thank you so much, sir, for joining us. Now, before we start with the discussion today, I would like to give a brief introduction about what we're going to discuss actually. Now, hearing impairment is not a loss of sound, but it is a loss of language. Children with hearing impairment can lead normal lives as good as other children. They can do full productive things and activities in their daily lives. The only difference is that while learning, they need to have an additional support. And today we will discuss all the things, the teaching methods and strategies relevant to these extra additional support that's required by these children. Before I continue with our discussion, I would request our viewers to contact us in case of any relevant queries for our topic of discussion today on any of these numbers that I just provide you with. Our toll-free number is 1800111208. Our phone number is 265111613 and our fax number is 265111609. We'll now begin with our discussion. Sir, first I would just like to ask you, what are the most basic requirements of a child with hearing impairment? Actually, the child with hearing impairment, as soon as he is identified, one should go in for a proper diagnosis, that what is the type and degree of hearing loss, and then should get a suitable hearing aid fitted, or whatever amplification device which suits the child, he should get fitted with that, and then the rehabilitative or the habilitative process should start. Okay. And what exactly are the principles or methods of teaching the children with hearing impairment? Actually, the children with normal hearing, they learn language automatically from the environment when they interact with proficient language users in the family and outside. The hearing, as you earlier said, that hearing impairment is not loss of sound but it's loss of language. And the children with hearing impairment they find difficult to learn language on their own. So they have to be facilitated. They have to be provided with language, in special environment with language inputs. So they may be at par with other children, other normal hearing counterpart, and can lead a useful life, can study well, can do whatever they feel like. Because schooling, all subjects, the knowledge of all subjects comes through the chariot of language by our ears. And if a child is not able to listen, hear, he'll miss a lot of things in the classroom, and then maybe he may be a backbencher or a dropout in the school. So language for children with hearing impairment is very, very, very important. And all those who are concerned with the child, either it is the parents or the caregivers, the teachers, everybody, the first concern is that the child with hearing impairment should learn language. So that means it's very important that a child with hearing impairment, everybody around him in his surroundings, be it his parents, be it his teachers, be it his caretakers, anybody has to give him full support in learning the language which is required for a hearing impaired child. So we'll go on with our discussion, discussing about the principles and techniques that are required for teaching the language of hearing impaired children. So what exactly are the principles? Actually, I'll be, during the course of my presentation, I'll be discussing, like as I said, that the hearing impairment impedes acquisition of language. The effect of language acquisition depends on degree and type of hearing loss. The environment also plays an important role in acquisition of language, and language plays an important role in almost in all aspects of life. Acquisition of language is important for every individual. So as I've said earlier in my discussion, that the hearing impairment impedes language development, and that depends upon the type and degree of hearing loss. So as soon as the child is identified with hearing loss, after proper diagnosis, he should be fitted with a suitable amplification device. Maybe it's a hearing aid or a cochlear implant, whatever. And
with that should start the language input, stimulation to language learning. And that's what I have said in my, that language is important for everybody. It's the language which keeps us in the world, and without language we are nowhere. Although we are sitting in a company of people, and if I don't know the language of that place, I am out of that group. So, and then now as a teacher, when we enter the class in any instructional setting and face challenges of how best facilitate language learning for all children in your class, boys and girls of all races, religion, colors, national origin and talent, personality, learning styles, skills and varying degree of hearing loss. Now when a teacher comes to the class, he has got a varied group of people, varied group of students with coming from different families, different socioeconomic background, different hearing loss and different learning styles. Some are good in learning, some are slow, some are medium. So the teacher has a very, very difficult task ahead of him while he is instructing or facilitating children for language learning. The teacher agreed that the class represents an incredibly diverse group of learners, each of whom is a wide range of strengths and needs. Now in a class like this, a class of children with hearing impairment should have not more than 8 to 10 students. And these 8 to 10 students have a diverse learning capacity, and their needs are different because the needs depends upon the family background, the family support, things like that. Then teaching language to children with hearing impairment is one of the major objectives of all teachers of children with hearing impairment. And this we have already repeated it twice, and again I'll say that not only the teachers, everybody who is concerned with the child is responsible for making the child learn language. So that means there's a specific language which is a tool of communication, and that the most important aspect is to teach the child with hearing impairment this particular language so that he can communicate efficiently and effectively in future. Now I'd like to give an example here, like Miss great lady, the Helen Keller. Somebody asked her, like Miss, if you are given a chance of next birth and you have to choose between the two, blindness or hearing impairment, what will you prefer? And she very effortlessly said that I'll prefer to be blind than deaf. Then the person asked why. Then she said the blindness takes us away from objects, and hearing impairment or deafness takes us away from people. Like Miss, if I am blind, I cannot see things, but if I am hearing impairment, although I am amongst the people, but I am not, because I am not been able to hear them. So that's why teaching language or making children with hearing impairment learn language is the most important task for anybody, including the teachers. It is important for the teachers of the children with hearing impairment to follow as far as possible the following principle of teaching language while presenting teaching language to the children with hearing impairment. Now, in the following slides, we will be discussing the principles of teaching, that while we are presenting or teaching language to children with hearing impairment, what should we keep in mind. So, now the first is to maintain balance between contextuality and decontextuality, to maintain a balance between abstraction and concretization, to maintain a balance between learnability and teachability, to maintain a balance between simplicity and teachability, to maintain a balance between rigidity and flexibility, to maintain a balance between planning and spontaneity, to maintain a balance between homogeneity and heterogeneity, to maintain a balance between assessment and instructions, to maintain a balance between content and use. Now we will be discussing one by one. So first, to maintain a balance between contextuality and decontextuality, language can be used and understood with and without context. The teacher of children with hearing impairment is in the beginning should teach language in context. Later, when the child gains maturity after a few years of schooling, the teacher may present teaching language in decontextuality. Now, what is happening, what is around the child, what the child is feeling, what the child can see, that is the context. We cannot talk in abstraction or without a context. So what the child is playing with, the child is doing it, that is the context. And to begin with, we should talk to the child in context, what is right there in front of the child. And once the child has covered a few years in the school,
we can talk about things which are not in front of the child, or we can talk out of the context. So that means we have to keep a balance between Context contextuality and and decontext. decontext. Like means- First, talk about the things that are in front of him that are reference to context, and then later on, maybe when he learns things in context, we can talk to him things that are out of context as well. Oh yes, yes. Then to maintain a balance between concretization and abstraction. It is general principle of teaching that a teacher proceeds from concrete to abstract. The same is true for children with hearing impairment. Based on this principle, the teacher of children with hearing impairment, while teaching the children with hearing impairment, should maintain a balance between concretization and abstraction. The doing stage, concrete objects to model problems. Representational to seeing stage, using representations of the objects to model problems, and symbolic stage, using abstraction to symbol models problems. Now, here the teacher should first represent concrete things or models. Then from models he can go to pictures that represents. Now, say the child is trying to teach an apple to the child, so he should have an apple or a model of the apple, and then he can go to the picture, and then he can talk about that we have got orchards, or the apples are born there, and that things like that. So concrete to abstraction. So that means teaching can have three stages, that is the doing stage, the seeing stage, and the symbolic stage. Symbolic stage. Okay. Then concrete representation abstract sequence of instructions provide a graduate and conceptually supported framework for the students to create meaningful connection amongst concrete, representational and abstract levels of understanding, beginning with visual, tactile and kinesthetic experience. To establish understanding, students expand their understanding through pictorial representation or concrete objects to move to the abstract understanding. Now, again, what I have already said, that first seeing things and feeling, the child is feeling the object, he is seeing the object, and then the representation, the pictorial group, and then to abstraction. Then to maintain a balance between learnability and teachability. The teacher should keep in mind that certain things are teachable and can be taught, while certain things cannot be taught, and the child has to learn these things on his own. Even language is supposed to be combined of learnable and teachable aspects. Teachable aspect can be taught, major role in learnable aspects also. All that has to be done is providing a learning atmosphere and situation that the child has enough capability to learn on his own. Remember that the child should not be underestimated nor overestimated, he should be encouraged. Now, here we say that the learnability and teachability. Now, it is said that language is a learned behavior. ये हमको विरासत में नहीं मिलती है कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी की बहुत अच्छी भाषा थी और मैं ये सोचूं कि वही भाषा मेरे अंदर भी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है. मेरे को भाषा अपने लिए सीखनी पड़ती है. एंड सेम इज ट्रू फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. They have got the capacity, they have got the ability to learn, and the teacher has to provide them facility, or he has to facilitate that the child learns language easily. So a teacher has to keep a balance between teachability and learnability, that what can be taught and what children can learn by their own experience and from the environment. Hence the teacher should maintain a balance between learnability and teachability. So that means everything cannot be taught. So the teacher should know that how much he has to teach the child, how much the child can learn, how much the child can grasp. Other things the child will learn automatically as he grows with age and time. So the teacher has to teach only as much as the child can learn. Next is to maintain a balance between simplicity and teachability. This is based again on general principle, always proceed from simple to complex. In any teaching, a teacher should remember to take up simple things first and then go to more complex ideas. It is easy to understand things which are simply by all. Do not make things complicated at first. A task which is too simple leads to lack of interest and overconfidence among students. A task which is too complicated leads to lack of interest and overconfidence among students. A task which is too complicated leads to discouragement, low self-esteem and lack of confidence among the students. Now, simple to complex. We learn simple things first and then we go to complex things. And if in a class
if the things are too simple, the children will learn it fast and they'll grow in overconfidence. And if they are too complicated, it will discourage them. They'll run away from learning because he'll say, I cannot understand. So the teacher has to maintain a balance between simplicity and teachability. Means कि कोई चीज़ इतनी भी आसान ना हो कि बच्चे उसको जल्दी समझ जाएं और फिर ये कहने लगे जी हम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, ये तो कुछ है ही नहीं, हम जल्दी से सीख सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि अगर इसकी विपरीत चीज़ें बहुत कठिन होंगी जिनको बच्चों को सीखने में बहुत मुश्किल हो सकती है, वहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि बच्चों की जो सीखने की रुचि है वो कम हो जाएगी. इसलिए अध्यापक के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना के रखे कि भाई कितना सिंपल करना है और कितना कॉम्प्लेक्स करना है. So that means the teachers should know, they should have a proper pace of teaching. They should go on from teaching the simpler things and then move on to the more complex things, so that the child, neither does he feel that he knows everything if he's being taught very simple things, nor does the child have low self-esteem and feel discouraged if he's being taught really complex things. So there has to be a balance which the teachers have to know. But to maintain a balance between rigidity and flexibility, according to this principle, the teacher had to maintain a balance between rigidity and flexibility. To some extent, she makes learning rigid, whatever necessary. At the other hand, she needs to be very flexible with ideas as things to change from time to time. When the teacher is flexible, the children take more interest. When the teacher is rigid, children know that there are limits of right and wrong. To an extent, flexibility makes learning pleasurable and rigidity leads to discipline. Now, here also, the teacher has to make a balance between rigidity and flexibility. Now, there are certain things which a child needs to learn. There the teacher has to be rigid. And there are certain things where flexibility is there, that I want to do this, I don't want to do this. So children can learn turn by turn. So a teacher has to keep a balance between rigidity and flexibility. And rigidity leads to discipline. There are certain components of language which a child has to learn. So the teacher has to be rigid at that point. And there are certain things, like right now learning king, palace. So the flexibility is there. The child may want to learn it or may not learn it. So that means that the teacher has to be affirmative. At the same time, the teacher can be a little flexible, so the child is learning the most important things by being disciplined also, and at the same time he can have a little pleasure while learning the same things. And the relevant things are supposed to be taught with more rigidity, and the simpler things that may not be that relevant can be taught with a little more flexibility. To maintain a balance between planning and spontaneity, according to the principle, the teacher should maintain a balance between planning and spontaneity. The teacher has to plan certain things and activities which are required to be planned, while there are things which are less related to planned ideas and come out spontaneously. So this is an underlying principle of the difference between structural and natural method of teaching language to the hearing impaired, which we will be discussing in later part. Now, there are certain things which have to be planned, and there are certain things which come out spontaneously. Like maybe the teacher is teaching something in the class and it starts raining outside. So that is spontaneously coming to him. So the teacher should talk something about the rains. Or maybe now the festival season is coming. A few days ahead we'll have the Shara and Diwali. So maybe the teacher can talk about those things in addition to the classroom teaching. So that is maintaining a balance between planning and spontaneity. What is coming through your way, you talk about that, and while doing that, don't forget that what you really want to give to the children, what you have planned for them, that should be given. So a balance should be maintained between the two. So that means the teacher has to have a basic balance between planning and spontaneity. For example, if something is happening, the teacher should know and be active and be able to discuss what is exactly happening at that very instance, and at the same time discuss also those things which are more relevant and which the teacher has planned to follow. To maintain a balance between homogeneity and heterogeneity, according to this principle, the teacher should try as far as possible to maintain a balance between homogeneity and heterogeneity.
Homogeneity means that all children in the class should be treated at par and equal, that is, all children are basically similar. It takes into consideration the common features among children which are present in any child. Now, for a teacher, all children in the classroom are alike. So, he has to be impartial while teaching and while providing instructions. And the second thing is that he has to maintain heterogeneity. There are children who learn faster than other children. So, he has to keep in mind the needs and interest of all children in the classroom, and that is what maintaining balance between homogeneity and heterogeneity. Like means at one point of time he has to deal with all children in the classroom, and on the other hand he has to keep in mind the child which are different. So that is it. And then next is to maintain a balance with heterogeneity maintains that there are individuals and other differences among children. It means each child is unique in its own way. The teacher has to maintain a balance between seeing children at the same. We all say children are the same. At the same time, we all say that each child is unique and one learns at one's own pace. The teacher should involve in group as well as organize individual activities underlying principles of Maria Montessori method. Now, this I have already said that every individual is different from the other. The needs of every child are different from the others. But once we talk of homogeneity, we have to deal with children at one level. And when we talk of children with heterogeneity, so we can involve them in group activities, we can form groups of some children together and the other children. So the teacher has to be a very, very smart and versatile organizing these activities. So that means although all the children have some characteristics and features that are very similar amongst them, at the same time every child is different, every child has got a unique characteristic and a unique trait. So therefore, for those unique traits, the teachers can have a one-on-one basis interaction, an individual group activity, but for the other, at the homogeneous level, the teachers should have the group activities which are followed for all children at the same time. And then to maintain a balance between assessment and instructions, the principle demands that the teacher should assess the child's language before the teacher proceeds to any further instructions. The teacher teaches language, assesses the child's language, whether he has learned or not, and only after ascertaining that the child has learned gives further instructions. The teachers constantly maintain a balance between assessing the language taught and proceeds to the further instructions. Now here I will say one thing. Once I start instructing the child for language learning, I should assess the language to know at what level the child stands, and then I should start the language instructions or facilitate language learning in the child. तो जब मैंने ऐसा कर लिया और उसके बाद में जब मैंने बच्चे को भाषा सिखाना शुरू किया, भाषा सिखाने के बाद में फिर उसका मैं असेसमेंट करूँगा, फिर उसका मूल्यांकन करूँगा। मूल्यांकन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चा उसको सीख गया है या नहीं. The child has learned what I intend to make the child learn, and only then I should proceed for further instructions. So a teacher has to make a balance between assessment and instructions. Like means पढ़ाने से पहले मूल्यांकन, पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन, and then next instructions. So that means the teacher has to first assess the needs of the child, what the child needs, how much the child knows, what the child needs to learn in the language, and then give further instructions before moving on in the teaching experience. So we're discussing with Mr. J.C. Gupta today that the principles of the various teaching languages to hearing impaired children. Until now we've discussed the various principles, we've discussed a balance that has to be maintained in various aspects. For example, planning and spontaneity, homogeneity and heterogeneity. Then we've got flexibility and rigidity and various other aspects between which a balance has to be maintained for teaching the children with hearing impairment. And we'll carry on with the discussion, but now it's time for a short break, so we'll see you after break.
The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। Welcome back after the break. Our topic of discussion today is the principles of teaching language techniques to children with hearing impairment. And till now we've discussed the various principles and the various balances which have to be maintained between different aspects. For example, homogeneity, heterogeneity, then we've got rigidity, flexibility, then we've got planning and spontaneity, then we've got assessment and instruction. So we were discussing the various balances that have to be maintained, and we'll continue with the discussion. The next is between content and use. The next is to maintain a balance between content, form, content and use. Now, these are three basic components of language: form, content and use. So, a teacher has to maintain a balance between the three. Now, the principle demands that the teacher should constantly maintain a balance between form, content and use,
of language, since these are three dimensions of language, here the form means phonology, morphology and syntax. Content is the semantics, meaning, and the use is pragmatics, applicability. The teacher has to make her students capable of using all the three form, content and use of language. Now, as I said, like these are three components of language. One is form, content and use. Now, form means what? The phonology. Now, phonology is the smallest unit of a language. Now, as we say ka, kha, ga or A, B, C, D, a, e, u. So, that then morphology. Morphology, how we make plurals, we add something, boys, we have to make past tense, we add ed, es and things like that. Then syntax, how do we make a sentence, the word order. अभी यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. हम कहते हैं राम ने आम खाया. अभी वी कैन नॉट से आम ने राम खाया, या राम आम खा रहा है, आम राम खा रहा है, आम राम खा रहा है, इस गलत. तो व्याकरण की दृष्टि से सिंटेक्स, द वर्ड ऑर्डर, वो बच्चों को ठीक मालूम होना चाहिए, तभी भाषा उनके अंदर अच्छी आएगी. Then the children will have a good language input. And the last is pragmatics, is use of language. किस वक्त हमको किस भाषा का प्रयोग करना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है. हो सकता है व्याकरण की दृष्टि से syntactically a sentence may be correct, but pragmatically it may be wrong. Now if I say I am eating a car, now if we look into the sentence structure of English, syntactically व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, मगर कार खाने की चीज़ नहीं है, तो प्रैग्मेटिकली प्रयोग की दृष्टि से ये वाक्य गलत है. तो द टीचर वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट शुड हैव टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द फॉर्म, कंटेंट एंड यूज ऑफ लैंग्वेज. एंड इफ इज एबल टू डू दैट, आई एम श्योर दैट चिल्ड्रन विल लर्न लैंग्वेज more usefully and more perfectly. So that means a very important aspect of learning a language is to have a balance between the form, content and use. The form basically refers to the syntax of the sentence or a word or anything. Then we've got content, that is the meaning. It refers to the meaning, that what exactly are we trying to say or trying to express. And then we've got use, that is if the thing is applicable or not. So basically there has to be a balance between the form, the meaning and the use of the words or the sentences. Now we'll be discussing some techniques of learning language. The first is oral technique. The technique of oral teaching means narration, telling stories, giving account of events to others. The purpose is to provide children with clear, interesting and ordered sequence of events so that children are able to understand and reconstruct those happenings in their mind. The teacher should use suitable language in a skillful manner. The language and speech used should be appropriate to the situation and mental background of the children. Now, as I said, oral technique is narration. हम इसमें किसी चीज़ का वर्णन करते हैं. Maybe I am describing, the teacher has got a picture in the classroom and the teacher is describing the picture, or an event which the children have seen and they are trying to discuss in the classroom. The teacher makes the story and narrates the story in a sequential way. And while doing this, the teacher keeps in mind that the language is appropriate to the children's age, or the children's ability to learn language. The children have learned language. अगर हम उन बच्चों से ऊपर की भाषा की बात करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बच्चों के शब्दकोश में या वोकैबुलरी में नहीं है, तो वो बच्चे उस ऑरेशन को नहीं समझ पाएंगे, नरेशन को नहीं समझ पाएंगे. तो यहाँ पर जब हम ओरल टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, तो टीचर को ये ध्यान रखना है कि जो भाषा का प्रयोग है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको बच्चे आसानी से समझ सकें, और जो भी हम बात कर रहे हैं वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए, बच्चों के अनुभव के अनुरूप होने चाहिए.
So that means in the oral technique, the teachers have to keep in mind that whatever is being taught to the child in an oral way has to be in order, it has to be sequential, and it also has to have such meaning that the child understands it very easily and it's very simple to understand and there are no complexities involved in this. Now, next is the description. Description is another form of narration. In the word of dictionary, description is setting forth, defining, depicting or portraying in words. In description, things are represented in words. One should describe familiar operations in the beginning, such as how a car is started or house is built, etc. Here also the language used should be interesting, suitable, age appropriate to hold the children's attention. Now again, description is, I will say, little different from oral technique. There also we are narrating, here also we are narrating, we are portraying. Something is right in front of me and I am just describing it. Maybe the child is playing with a car and I say, क्या कितनी सुंदर कार है, कार का रंग लाल है, कार के पहिए हैं, कार चलती है. तो this is what I am describing each and activity of that particular object or particular thing which is right in front of the child, and I am portraying it. I am describing it activity by activity and step by step. Here also the teacher has to be very, very cautious about the use of language. The language has to be age appropriate to the child. It should be simple and interesting, and it will motivate child to learn language more and more faster. So that means description technique is used in those cases when we're supposed to describe something in front of us, an object or narrating some situation or something. Oh yes. Okay. Actually, this is what we do with our normal children. जो हमारे सुनने वाले बच्चे होते हैं, अब सुनने वाला बच्चा किसी भी खिलौने की तरफ देखता है और माँ उस खिलौने का वर्णन करना शुरू कर देती है. वो पंखे की तरफ देख रहा है तो वो बोलती है, देखो हाँ पंखा है, पंखा चल रहा है, पंखा गोल गोल घूम रहा है. So this is what we are doing. We are describing the activity of that particular object the child is looking at. So here also, that's what I said. This description can be both. It can be child-centered as well as we can improvise. We can create situations where we can describe certain things. But while we are describing, we have to keep in mind the child's level of language. बच्चे की भाषा का स्तर क्या है, बच्चा कितनी भाषा अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकता है. And while describing, we can keep on introducing new words too. So that means the teacher should keep in mind the most important thing is whatever language the teacher is using, whatever technique the teacher is using, the most important thing is that the language that is used has to be easy and has to be understood very easily by the child. Only then will the child learn what the teacher is trying to explain. Explanation is another technique of teaching. A teacher has to develop many skills, and one of those is the ability to explain. To explain it means to make the subject matter simple, to clear obscurities, to lie upon the meaning of, to elucidate. The teacher has to make use of explanation while teaching a lesson, a science lesson or a social studies lesson. The objective of all explanation are to enable children to take intelligent interest in proceedings, to grasp the purpose of what is being done. In order the explanation is to be effective, the teacher should use simple language. The teacher may have to point out things, may describe or narrate, or make illustrations, verbal or non-verbal, and use audiovisual aids so that the significant facts, situation and activities that are involved in any experience are perceived and appreciated by children. Now, here again explanation, there are two things in it. Number one, the skills of the teachers, that how good the teacher is to explain things. How can he can make the subject matter simple? How can he make the language learning simple? The presentations of language is such that the child grasps the language automatically and quickly, while the teacher is making things simpler, and he is describing, he is demonstrating. Say the word comes girna or katna.
Now the teacher can demonstrate. पेन नीचे गिरा करके she can just put the pen down or she can drop the pen down and can say देखो पेन गिर गया, or she can drop herself down for a little and said that मैं गिर गई, मैं गिर गया. And now this is what demonstration is. So she can demonstrate, can use audio visuals. अभी आप ये इस चैनल पर देख रहे हैं, टीवी में मेरे पिक्चर आ रही है, मेरे साथ में प्रेरणा जी बैठी हुई हैं, इनकी पिक्चर आ रही है, कभी कभी जो मेरी स्लाइड्स हैं वो भी वहाँ पर आ जाती हैं. तो इन सब की क्या ज़रूरत थी? इतना बड़ा जो एक सिस्टम इन्होंने लगाया, इन सब की ज़रूरत नहीं थी. इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, रेडियो में वहाँ पर एक रेडियो लग जाता और रेडियो पर ये सारी बातें आती रहती हैं, आप सुनते रहते और सीख जाते. मगर ये जो ऑडियो विजुअल आपके सामने आ रहा है, मैं जो आपके सामने आता हूँ या प्रेरणा जी आपके सामने आती हैं, जो लिखा हुआ आपके सामने आता है, ये जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ उसको ग्रेस्प करने में, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझने में आसानी करती है. तो एक्सप्लेनेशन के अंदर भी हम ऑडियो विजुअल्स का यूज़ करते हैं. एंड देन यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि भाषा जो है वो बच्चों की योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए. It should be simple. So that means under explanation there are two major aspects. One is what the teacher is teaching, one is what the child is learning and grasping. And the very important thing here is that we can use audio visual clips so that the child has more easy understanding of what the teacher is trying to teach the child. Next is questioning. Questioning is one of the most important techniques of teaching. By means of questioning, the teacher can keep a close touch in the class. Through questioning, knowledge can be given and shared in the class, and questioning generally are asked. मेरे को याद आता है कि जब मैं छोटा था बहुत प्रश्न पूछा करता था. गर्मियों की छुट्टी में हमको नाना नानी के यहाँ जाना होता था. तो जैसे ही माताजी मेरे को कहती थी कि भाई हमको नाना जी के यहाँ जाना है, तो मेरे सवाल हो जाते थे कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, नाना जी के यहाँ से और कहाँ जाएंगे. और उसके बाद में जब हम बस में आके बैठ जाते थे फिर वहाँ मेरे प्रश्न शुरू हो जाते थे. बस क्यों नहीं चल रही है, बस कब चलेगी, बस रास्ते में रुकती, बस रुक क्यों गई, बस कब पहुंचेगी. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रश्न है, दीज क्वेश्चंस एज एंड व्हेन माय मदर यूज्ड टू आंसर इट, आई यूज्ड टू रिलेट देम एंड लर्न लैंग्वेज. तो एक तो हम प्रश्नों के माध्यम से बच्चे भाषा सीख सकते हैं, बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं, ये एक बात हुई. दूसरी बात हुई कि वी कैन कीप ए क्लोज कॉन्टैक्ट. अगर हम क्लास में प्रश्न नहीं पूछते हैं और सिर्फ पढ़ाते जाते हैं, तो अब कौन बच्चा अटेंटिव है, कौन बच्चा अटेंटिव नहीं है, कौन बच्चा समझ रहा है, कौन बच्चा नहीं समझ रहा है, ये हमको नहीं मालूम रख सकता है. तो जो क्वेश्चंस हैं दे कीप अस इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द क्लास विद ऑल द स्टूडेंट्स, एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर अटेंटिव टू. क्योंकि बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि मेरे से कब प्रश्न पूछ लिया जाएगा. ओके आप बताओ, एंड ही इज नॉट इन द क्लास सो ही इज लॉस्ट. सो द क्वेश्चन जो है वो बच्चों को क्लास को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चनों के माध्यम से भी शेयर नॉलेज, जैसा मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूं. नाउ टू फाइंड आउट व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट ही डज नॉट नो, टू कीप द चिल्ड्रन अलर्ट एंड अटेंटिव इन द अबाउट द सब्जेक्ट, to know whether the children are following the steps of the lesson or not, to revise the lesson and to fix it clearly in the minds of the children. The question may be preliminary, developing, teaching or training, testing or recapitulating. जैसा मैंने पहले बताया था कि बाई क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ करके हम बच्चों को चुस्त रख सकते हैं, क्लास में अटेंटिव रख सकते हैं. द चिल्ड्रन विल बी अटेंटिव इन द क्लास, क्योंकि उनको ये मालूम है कि सर हमारे से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर हमने जवाब नहीं दिया और हमारा ध्यान किधर हुआ तो मुश्किल हो जाएगी. ये तो एक बात हुई. दूसरी बात क्या हुई कि टीचर को ये पता लग जाता है कि वो बच्चे कितना समझ गए, नंबर एक. नंबर दूसरा, द स्टूडेंट्स गेट टू नो दैट व्हाट दे हैव अंडरस्टूड. और अगर दोनों को ही, अध्यापक और छात्र दोनों को ये पता लग जाता है कि अध्यापक को ये पता लग गया मैंने क्या सिखाया और बालक को ये पता लग गया मैंने क्या सीखा, तो इससे बढ़िया बात तो कुछ होती नहीं है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, दैट बोथ द पार्टीज नोज दैट व्हाट आई हैव टॉट एंड व्हाट आई हैव लर्न. देन व्हाट द चाइल्ड हैज नॉट लर्न, he can ask questions and can complete what he has not learned.
So the questions help that way also. And then what I have taught, maybe the teacher has taken children for a excursion, visit के लिए लेके गए थे, यहाँ आकर के क्लास में आए, क्लास में आके सवाल पूछते हैं, कल हम कहाँ गए थे, कल हमने क्या क्या देखा, कल किस किस ने क्या क्या काम किया. So we can ask questions like that. Means we are recapitulating it, we are revising the lesson, and in a way we are trying to know that the children has learned it and fixing in their mind. The concept are fixed in the child's mind, and then the questions may be preliminary, second, developing, and teaching and training. Now I have to start a lesson. Maybe some story. So in the beginning I asked, have you seen this, have you seen that? Or let me take a concrete example. एक बहुत छोटी और प्रसिद्ध कहानी है प्यासे कौवे की. तो टीचर comes to the class with a picture of a crow or a model of the crow and shows, you know what is this? So they are primary questions. She is showing different pictures, different objects and asking questions, so preliminary questions. And then she said, okay, that based on these objects, I'll tell you a story today. मैं आपको ये कहानी बनाती सुनाएंगे. And while she is teaching, she asked questions. The crow was very thirsty. What did he do? So these are secondary questions where she is posing problems and asking the children to find the solutions. And once we do that, it's a very, very good technique of developing language in children. And then third is recapitulating. She recapitulates what she has taught. वो पुनरावृत्ति करती है, दोहराते हैं कि उसने क्या पढ़ा दिया, कौवे ने क्या किया, कौवे ने पानी कैसे पिया, things like that. So that means questioning is a very important technique of teaching language, as not only is it interesting but it's also interactive at the same time. In questioning, the teachers also get to know that how much the child has learned, the child also gets to know that how much he has understood at the same time, and in this way we also get to know if the child is interactive, if he's attentive in the class, if he's not just physically present but he has to be mentally present as well, because he has to be alert and attentive, as he knows the teacher can ask him any question at any point of time. So he has to be attentive in the class, and at every point of time he has to keep on listening to what the teacher is saying and keep on understanding, because the teacher will anytime just get back to him and try to question him and what she's done till now or what she's going to do in the next session. So that is questioning. It's a very important technique of teaching. No, the next technique is play. Now play is said to be the language of the child. What the child lacks is verbal facility. He makes, through using his total body in expressing his feelings, play facilitates and encourages sensory and perceptual experiences. It also leads to apprehensions and manipulative constructive possibility of both animates and inanimate objects. It is believed that proficiency and learning comes not from reading and listening but from actions, from doing and experiences. Gladwell Cook has said this, that learning comes not from reading and listening but from action and from doing and experiencing. Now I'll start from the last line. If I keep on listening to some language, say French, Chinese or Japanese, I'm not going to learn it. Until unless I am doing something, I am looking at something, I am experiencing something, and then I listen that language. So that association is very, very necessary for learning of language. Now, play is said to be the language of children. Most children are interested in play. And what do we do in play? We experience, we manipulate things. आप बच्चे को एक खिलौना ला के दीजिए, खेलेगा, थोड़ी देर खेलेगा, खेलने के बाद में उसको देखेगा भाई ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, and he'll break it and then try to mend it back. So encourages perceptual experiences. खेल के द्वारा जो हमारे experiences हैं, हमारी समझ जो है, हमारे दिमाग में कुछ अनुभव आते हैं
और जब उन अनुभवों को हम भाषा के साथ में जोड़ते हैं, द right and natural language is provided while the child is playing or while the child is doing something, then we learn language faster. So that means The play way techniques is based on the following principles. Learning process to be conducted through playful activities as they are soothing, purifying and interesting. कि जो हमारी सीखने की जो चीज़ें हैं उनको हमें एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें प्ले वे में करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को वो बहुत पसंद होती हैं और इंटरेस्टिंग होती हैं. द सेकेंड इज लर्निंग शुड टेक प्लेस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम विदाउट एनी रिस्ट्रेन. अक्सर हम ये करते हैं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट प्ले विद दिस, डोंट प्ले विद दिस. सो वी शुड टेक अवे थिंग्स विच वी डोंट वांट दैट द चिल्ड्रन शुड प्ले विद. वी शुड ओनली कीप थिंग्स वी विश दैट द चिल्ड्रन शुड प्ले विद देम. सो but while the children are playing, they should be free, no restraint, no restrictions, and while playing we can provide them as much as language is possible as a commentary. Then method of imparting should be informal and natural to suit the interests and needs of the children. Though we are improvising play, we are improvising, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चे को भाषा प्रदान करना, और हमने भाषा के लिए वो जो खेल जो है एक बनावटी खेल हमने वहाँ पर रखा कि भाई हम ये खेल खेलेंगे, मगर बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये मेरे ऊपर लादा जा रहा है. बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि इट इज़ कमिंग इन ए नेचुरल वे, प्राकृतिक रूप से आ रहा है. तो अगर ऐसा होगा स्वतः बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा. द चाइल्ड विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड. एंड हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की आवश्यकताएँ क्या हैं, बच्चे को किस प्रकार के खेल की आवश्यकता है. The teacher's attitude be such to encourage free expression on the part of the children, enough opportunities to provide the children for expression. Children should fully enjoy the learning process. They should be active participants in it and responsible for their own progress and development. Now here, in play, the teacher's attitude is very, very necessary. It's very, very important. It should be very positive. As I've already said कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दखलंदाजी के बालक को हमें खेलने देना है, बिकॉज जब तक बच्चे का फ्री एक्सप्रेशन नहीं होगा हम बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार भाषा प्रदान नहीं कर पाएंगे. एंड देन इन अवस्था में जहां बच्चा अपनी रुचि के साथ में, अपने इंटरेस्ट के साथ में खेल रहा है, इट विल फैसिलिटेट लर्निंग फास्टर. बच्चा जो है भाषा जल्दी सीखेगा और वो अपनी प्रोग्रेस, अगर बच्चा स्वतः सीखता है, स्वतः खेलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो नेचुरली उसकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा. So that means play is a very interesting technique of teaching and learning, and as the saying goes that all work and no play makes Jack a dull boy. So therefore it's very important that the child should not just be taught in a closed classroom, in a closed environment, just speaking and learning, but also the child should be taught in an open environment. He should be let free, he should be let to play in a casual and informal manner as well. So till now we were discussing the various so wants to say something. एक्चुअली प्रेरणा जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन नहीं जानता है, और उन्होंने कहा है कि द चाइल्ड शुड बी लेफ्ट इन नेचर्स लैप टू लर्न, और जो अध्यापक है वहाँ पर वो उसका फैसिलिटेटर होना चाहिए. तो प्ले में भी यही होना चाहिए जो मैं बात कर रहा था कि भाई लेट द चाइल्ड प्ले फ्रीली एंड let the teacher be there as a facilitator. Now here the facilitation is for learning language, so that the teacher has to bear in mind, well, while the child is playing, the teacher can provide lumps and lots of language there. So that means even in an open environment where the child is let free to do what he wants to do, the teacher can be there as a facilitator and teach the child a lot of more important and relevant things as well. So right now we're discussing the various techniques of teaching a child with hearing impairment. We've discussed oral techniques, we've discussed description, explanation, questioning and the play techniques. We will carry on with this discussion, but now it's time for a short break, so we'll see you after a short break.
The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। Welcome back after the break. Our topic of discussion for today was principles of teaching language techniques to children with hearing impairments. Till now we've discussed the various principles involved, and now we were discussing the various techniques of teaching the language to the hearing impaired children. And till now we've discussed oral techniques, description techniques, explanation techniques,
questioning techniques and the play technique. And now we'll go on further with our discussion of the various techniques. Okay. Now, the next technique is activity. Now, activity are things that is carried out with a purpose in a social environment involving physical and mental action. Activities should furnish for children rich and purposeful learning experience. These experiences help children develop fuller understanding, wider participation and greater growth. Now, as I've said, जब हम कोई भी काम करना होता है उसमें हमें दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है. एक तो हम शारीरिक रूप से उसमें सम्मिलित होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा मस्तिष्क हमारा जो है वो इन्वॉल्व होता है. अगर केवल हमारा मस्तिष्क इन्वॉल्व हो और शारीरिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती है. वो किसी प्रकार की भी एक्टिविटी हो. अगर हमको गिलास में बोतल से पानी डालना है तो उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज़ होंगी. अगर मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं है तो विल नॉट बी एबल टू पोर वाटर इनटू द ग्लास. तो किसी प्रकार की एक्टिविटी के लिए भी हमारे को दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती हैं. और जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, वाइल वी आर डूइंग एक्टिविटी, वी आर एक्सपीरियंसिंग, हमारे को बहुत अनुभव होते हैं. और भाषा सीखने के लिए ये एक आधारभूत आवश्यकता है कि हमारे जो मतलब अनुभव जो हैं उनके साथ में जब भाषा संलग्न होती है, मिलती है, एसोसिएट होती है, तो हम लैंग्वेज लर्न करते हैं. मतलब ये कि अगर हम किसी चीज़ को केवल देखते रहें, उस शब्द को ना सुने, उससे जो संबंधित शब्द है या उससे संबंधित नाम जो है उसको हम ना सुने, तो हमको भाषा नहीं आएगी. और हम केवल नाम सुनते रहें और उस वस्तु को ना देखें या उस एक्टिविटी को ना देखें, तब भी हमको भाषा नहीं आएगी. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास में जो अनुभव हैं, जब उनके साथ में भाषा जुड़ती है, भाषाई एक्सपीरियंसेस जुड़ते हैं, भाषाई वाक्य जुड़ते हैं, तो हम भाषा सीखते हैं. और एक्टिविटीज़ जो हैं, विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हमको अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रदान करती हैं. और जब उनके साथ में जो कनेक्टेड भाषा है वो दी जाती है तो हमको भाषा समझ में आती है. नाउ द एक्सपीरियंसेस हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अंडरस्टैंडिंग, वाइडर पार्टिसिपेशन एंड ग्रेटर ग्रोथ. जब बच्चे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें साथ में मिलकर के काम करने की, सोचने की, रीजनिंग, तर्क की शक्तियाँ बढ़ती हैं और उनमें उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो फास्टर होता है भाषा की दृष्टि से. ना एक्टिविटीज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप. फॉर चिल्ड्रन एट प्री स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल लेवल, एक्टिविटीज़ लाइक एक्शन सॉन्ग, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, लिसनिंग, observing, collecting, sorting, talking, experimenting and constructing are useful. अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयु के साथ में हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं. तो अभी मैं पहले बात कर रहा था कि प्री प्राइमरी लेवल पर, जहाँ प्री स्कूल लेवल पर, जहाँ बच्चे प्रवेश के बाद में 3 या 4 साल या 6 साल की उम्र तक या 5 साल की उम्र तक रहते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. सॉर्टिंग एक्टिविटीज़. ना सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में भी करा सकते हैं, घर में भी करा सकते हैं. घर में जैसे कि आपको आजकल मालूम है प्लास्टिक बैग पर बैन लग गया है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स. तो हम ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स लेकर के आते हैं वो क्या है, घर से एक क्लॉथ बैग लेके जाते हैं और सारी वेजिटेबल्स उसमें ला करके लेकर के आते हैं. सो वी कैन वंस वी कम बैक होम वी कैन जस्ट टर्न इट ओवर और बच्चे से हम वो सॉर्टिंग करा सकते हैं कि भाई आप भिंडी एक जगह रखो, आलू एक जगह रखो, बैंगन एक जगह रखो. तो वहाँ उस बच्चे को एक्सपीरियंस होता है. एंड वाइल ही इज एक्सपीरियंसिंग, वाइल ही इज सॉर्टिंग आउट vegetables, we can name them. Okay, keep all the potatoes here. Okay, you have kept that potatoes with brinjals, you have kept that potato with tomatoes. So that way we can provide him language. So that is one sorting. And then collecting, we can go outside the ground and can collect some small stones. छोटे छोटे पत्थर उठा करके ला सकते हैं. क्लासरूम में एक टीचर है, ही डज एन एक्टिविटी, ही टेक्स दी चिल्ड्रन आउट इन द प्लेग्राउंड और वहाँ जा कर के उनसे कहते हैं कि भाई सब बच्चा एक एक पत्थर उठाएगा. तो जब वंस वी कम बैक टू द क्लास, नाउ देयर आर नियरली 10 चिल्ड्रन एंड वी हैव गॉट 10 स्टोन्स. 10 पत्थर हमारे पास में आ जाते हैं. तो वो टीचर उनको अरेंज कर सकता है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट,
विच इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है। तो इस प्रकार से हम एक्टिविटी हमने एक छोटी सी कराई एंड वी आर प्रेजेंटिंग लैंग्वेज टू द चिल्ड्रन। एंड देन ड्राइंग, डिजाइनिंग, now the children have got a lot of concepts in their mind, so we can say all the children will draw some animal. तो बच्चों ने डिफरेंट एनिमल्स क्लास में घर से आते वक्त देखे हैं, दे हैव गॉन टू द जू, दे हैव सीन सम एनिमल्स देयर, दे हैव सीन बर्ड्स, so the children will be drawing all those, and once they have finished the drawing, the teacher collects and can frame a story on that and can tell in the class. So by activity the children are getting first hand experience. बच्चों को एक अनुभव प्राप्त हो रहा है और अध्यापक जो है उन अनुभवों को भाषा के साथ में कनेक्ट कर रही है, तो एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे भाषा जल्दी सीख जाते हैं. नाउ आई विल गो टू सेकंड. एज द चिल्ड्रन प्रोग्रेस इन द एलिमेंट्री प्रोग्राम, द एक्टिविटीज में इंक्लूड पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग, मैप मेकिंग, फील्ड ट्रिप्स, गार्डनिंग एटसेट्रा. नाउ जैसे ही बच्चे प्री स्कूल से प्राइमरी लेवल पर आते हैं तो वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ हम अलग अलग कर देते हैं. वहाँ पर वो ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हैं. ना अभी हमने उनको पहले फ्री हैंड दिया था कि आप क्या ड्राइंग करना है. यहाँ पर वी कैन गिव देम अ टॉपिक, वी कैन गिव देम समथिंग दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस, यू हैव टू ड्रॉ दिस, यू हैव टू ड्रॉ दिस, you have to paint green or whatever. And gardening is an activity where he will learn soil, he will learn manure, कौन सी खाद डालनी है, नेचुरल डालनी है या सिंथेटिक डालनी है, बीज कैसे होता है, हाउ डज अ प्लांट ग्रो, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, थिंग्स लाइक दैट. किस पेड़ को उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है, कौन से सीजन में कौन सा पेड़ उगता है, कौन से फ्रूट्स हमारे को कौन से सीजन में मिलते हैं. तो बाय गार्डनिंग वी कैन टीच ऑल दिस. एंड देन फील्ड ट्रिप्स. नाउ फील्ड ट्रिप्स इज अनदर एक्टिविटीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वट एवर पिक्चर यू शो ऑफ ताज महल, in a picture you cannot describe the beauty of Taj, and if you are able to take the children to Taj and show them there, it will be just fixed in their mind, and whatever supported language you are providing them, the children will learn it faster. So field trips, मैंने ताजमहल का एक एग्जांपल दे दिया, मगर जिनकी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर उनको हम उन्हीं के शहर के अंदर हिस्टोरिकल प्राइमरी लेवल पर कुछ ना कुछ लेसन्स ऑन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स रहते हैं, इतिहास के बारे में, जो ऐतिहासिक स्थल है हमारे उनके बारे में रहते हैं, तो वो ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर के उनको हम विजिट करा करके उनके बारे में अच्छे से बता सकते हैं. So that means activity is a very important technique. Since in activity we have the children who can experience things firsthand, they can get to know things which are happening actually by doing them themselves on their own. For example, there are various activities which the children can perform, like designing, drawing, painting. They can go on field trips. Then they can do various other things like gardening. So basically it's the child who has to perform all these activities with which he can learn and grow with time. Now here are some of the activities which I have suggested. Now local surveys and excursions. आप बच्चों को बाहर ले जाएंगे, घुमाएंगे, एक्सकर्शन कराएंगे, वहाँ उनको एक्सपीरियंस होगा. यू कैन कम बैक एंड हैव अ चार्ट स्टोरी ऑन दैट. हम कहाँ गए थे, क्या देखा, क्या क्या किया. एंड देन द टीचर, द चिल्ड्रन विल स्पीक आउट. लाइक in speaking, once I say, they might have some gestures or signs and speech, broken words. The teacher has to complete them in full sentences and then present them back, and can then have a chart story, can have questions on that. Then second is debate, discussions and dialogue. The third is hobbies. The third is dramatization, club and society, projects, competitions, cultural and recreation programs, and social service. Now we'll go on to methods of teaching language. Till now we have discussed that the different principles. भाषा, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हमको किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए. फिर उसके बाद में हमने बात करी कि कौन कौन सी टेक्निक्स जिनके द्वारा आसानी से हम बच्चों को भाषा प्रेजेंट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टू चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. दो प्रकार के मेथड है यहाँ हम बात करेंगे. एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है और दूसरी नेचुरल अप्रोच है. तो पहले हम स्ट्रक्चर अप्रोच की बनावटी विधि की बात करेंगे.
Now in structural approach, the structural approach involves direct planned instructions in the components of language and a visual coding of symbol system to represent the order or relationship within each component. तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर्ड विधि के अंदर जो कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे, लास्ट प्रिंसिपल हमने बात करी थी, टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन फॉर्म, कंटेंट एंड यूज. नाउ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. स्ट्रक्चर विधि के अंदर हम इन्हीं के चारों ओर अपनी भाषा को प्लान करते हैं, अपने लेसन को प्लान करते हैं कि बच्चे को फॉर्म भी मिले, कंटेंट भी मिले और यूज भी मिले. एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड इन ए कोडेड सिंबल. We'll be seeing in further slides that how they are represented in different coded symbols. Now this approach requires to study grammar to learn language. Now through this structured approach, if the children have to learn language, they have to learn grammar. व्याकरण का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है. The approach is also termed as formal, analytical or सिस्टमेटिक अप्रोच. अलग अलग नाम दिए गए हैं इसमें यहाँ पर. तो स्ट्रक्चर अप्रोच में द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज एंड कैटेगराइज द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, e.g. पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर सिंबल्स एंड वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच इज फ्रिजल्सकी. नाउ जब हम बच्चों को स्ट्रक्चर विधि से बता रहे हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि भाई उनको ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. ओनली देन दे कैन लर्न लैंग्वेज थ्रू दिस, कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है. तो ये सब चीज़ें बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है उनको. और इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जो फ्रिजल्सकी है, अभी उस देखते हैं उसके बारे में. The Frizzlsky is one of the most popular method of teaching language until 1960. As reported by Nelson in 1949, more than 2/3 schools of children with hearing impairment use Frizzlsky as their primary tool for language instructions. कि नेल्सन ने 1949 में कहा है कि पूरे संसार में बधिर बालकों के जितने भी विद्यालय थे उसमें से 2/3 स्कूल्स फ्रिजल्सकी को बच्चों को भाषा सिखाने के लिए, भाषा प्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे थे. और 1960 के दशक तक इस विधि का भाषा सिखाने के लिए भरपूर प्रयोग हुआ है. द फ्रिजल्सकी वाज डेवलप्ड बाय एडिथ फ्रिजल and published in her book Straight Language for the Deaf in 1949. It is a very highly structured approach to language instructions. According to the structural linguistics, the words are basic building blocks of sentences, and the sentences are formed by left to right combination of words into a string. Now, Edith Frizzell ने ये जो फ्रिजल्स की है उन्होंने डेवलप की थी, और ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है. इसमें टीचर्स पहले से डिसाइड करके जाता है कि भाई मेरे को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है. नथिंग कम्स नेचुरली इन दिस. एंड देन सेकेंड इज दैट किसी भी भाषा में पहले हमारे स्वर व्यंजन आते हैं, फिर शब्द आते हैं, शब्दों के बाद में वाक्य बनते हैं, और वाक्यों को बनाने के लिए एक निश्चित तरीका है. हिंदी के अगर हम वाक्य लिखते हैं तो पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है. इसके विपरीत अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. जैसे राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग अ मैंगो. तो और इन दोनों ही भाषाओं में जो हम वाक्य बनाते हैं वो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ चलते हैं. कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जैसे उर्दू भाषा में राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, मगर यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं या अंग्रेजी की बात कर रहे हैं या इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उर्दू को छोड़ करके, वो सभी भाषाएं बाईं तरफ से दाईं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं. और हर एक भाषा में उसका एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, व्याकरणिक शब्दों का स्थान है
कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा. The physical key graphically displays systematic relationship that is commonly acquired through auditory mechanism. It was developed to provide children with rules that are visually accessible. Through the use of a key, a child with hearing impairment can write a sentence by visually following the English rules of syntax. The child with hearing impairment can use the key to correct composition errors. Became very widely used from 1927 through the years early 1970s in oral and manual schools. Now, Frizzle's key में जो है इसको एक टेबल बना देते हैं. टेबल के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद में कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद में कौन सा शब्द आएगा. और बच्चे जो हैं भाषा को ग्रामेटिकली रूप से विजुअली असेस कर लेते हैं कि वो देखते जा रहे हैं. अगर मेरे वो की मेरी नहीं बनी हुई है, इफ आई एम राइटिंग ए सेंटेंस आई कैन राइट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द सब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स और द वर्ब फर्स्ट और द वर्ड आफ्टरवर्ड्स. गलत जो वर्ड ऑर्डर है वो गलत हो सकता है, मगर जब हमने एक की बना दी, एक स्लेट बना दी, एक टेबल बना दी और उस टेबल के अंदर हमको उन सेंटेंसेस को फिट करना है, तो वो गलती के चांसेस जो है, देयर आर लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बीइंग कमिटेड बाय स्टूडेंट्स. और हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड जो है वो विजुअली उन वाक्यों को उस स्लेट में रख सकता. और ये 1927 से लेकर के और 1970 के शुरुआत तक, या ये कहूँ कि 60s के एंड तक जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित रही. Now, this is the key. Now, Frizzle key, the key consists 6 columns as is illustrated in the table. Each column is labeled with a set of symbols or headings that represent linguistic structures and functions within the sentence. Now, पहले कॉलम में जैसे लिखा हुआ है what, whose, who. Now, ये what, whose, who जो है, it has a particular meaning. Now, if we say the word who, now who का जब हम बात करते हैं या कौन हिंदी में हम कहें, तो हम ये देखेंगे कि जब भी इसका उत्तर आता है तो उसमें उत्तर में क्या होता है कि उत्तर में किसी व्यक्ति का नाम होता है. राम, श्याम, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम होता है, या किसी मैं ये कहूँगा कि एनिमेट वस्तु का नाम होता है. इसी प्रकार से what refers to inanimate objects, कुर्सी, मेज, टेलीविजन, पंखा, मगर यहां पर भी ये नाउन्स आते हैं. एंड whose, इसमें किसका, किसकी, मेरा, मेरी, ये प्रोनाउंस को रेफर कर देता है. इसमें सर्वनाम आ जाते हैं ज़्यादातर. या अंग्रेजी में हम बात करें मोहन्स या चिल्ड्रंस या टीचर्स, तो अगेन ये नाउन्स आ जाते हैं. या किसका, किसकी, किसके जो है whose pen is this, his, और राम्स पेन, whose notebook is this, श्याम की कापी है या श्याम्स नोटबुक. तो यहां उन बच्चों को ये पता लग जाता है कि इसमें हमारे को जब भी आएगा कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा और वो नाउन आएगा. देन कम्स द वर्ब, बिकॉज इट वाज डेवलप्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं उसमें उसी में बात करूंगा. बाकी यहां मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली का एक स्कूल है, राजकीय लेडी नॉइस सेकेंडरी स्कूल फॉर द डेफ, और वहाँ पर प्रिंसिपल हुआ करते थे मिस्टर AC सैन, और उन्हीं के एक सहयोगी थे श्री कुंवरपाल गुप्ता जी. उन दोनों ने मिलकर के 1960 के अंदर इसका हिंदी रूपांतर किया था. मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश करी मगर मेरे को मिल नहीं पाया, और मैं अभी भी उसकी खोज मैंने जारी रखी है. और मेरे को अगर मिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर कभी आया तो ये स्पेशली इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस प्रोग्राम स्पेशल 5 मिनट इन लोगों से रिक्वेस्ट करके मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ी में अवेलेबल है, इसका हिंदी में भी रूपांतर कर दिया गया है और वो हिंदी भाषा के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है. और ये फिजरल्स की जो है भारतवर्ष के स्कूलों में भी काफ़ी प्रयोग में आती रही है 70 के दशक तक. तो अंग्रेजी में यहाँ पर क्रिया आ जाएगी हमारी, द वर्ब विल बी देयर, देन व्हाट, हुज, whom एंड व्हाट. अगेन वही नाउन्स एंड प्रोनाउंस जिसमें ऑब्जेक्ट्स हमारे आ जाएंगे. देन वेयर, इट रेफर्स टू प्लेस. देन हाउ मच, हाउ फार, हाउ ऑफन,
हाउ लॉन्ग एंड व्हेन, कब। तो इंग्लिश भाषा का चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड सेंटेंस हो, इट कैन बी फिटेड इनटू दिस 6 कॉलम्स, और वो बच्चा विजुअली देख सकता है कि भाई कौन सा शब्द किसके अंतर्गत आया है, एंड ही गेट टू नो दैट ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ज्यादातर नाउन्स होते हैं, चाहे वो एनिमेट हो या एनिमेट हो, और यहां पर इनका हम प्रोनाउंस को भी प्रयोग में ला सकते हैं। एंड देन ही गेट टू नो वेयर, कहां, ऊपर नीचे अंदर बाहर, एंड हाउ मच, गेट टू नो द क्वांटिटी, बहुत ज्यादा बहुत कम, दूर पास, एंड व्हेन, गेट द टाइम कॉन्सेप्ट, कल परसों, 1 घंटा पहले, 2 घंटा बाद। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, उनको कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं और उसके साथ साथ जो भाषा है उसको ठीक से सीखने का प्रयास करता है। द फिजल्स की along with variations and expansions into patterns language systems provide the deaf child with a framework of systems for the comprehension and production of the English language. One of the major problems with the pattern approach is that teaching must be carefully planned and integrated into the environment. Now, फिजल्स की along with variations and expansions into patterned language system, मैंने आपको बताया कि ये जो है भाषा का एक पैटर्न लैंग्वेज है। यहाँ हम बच्चों को पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकर के, पैटर्न लेकर के बच्चों को भाषा सिखाते हैं। तो इसमें अगर हमने लेसन को अपने केयरफुली प्लान नहीं किया, इफ यू हैव नॉट प्लान्ड अवर लेसन वेरी केयरफुली, तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। बच्चे गलत ग्रामर, गलत भाषा सीख सकते हैं, गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। तो टीचर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वाइल ही इज प्लानिंग टीचिंग लैंग्वेज थ्रू फिजल्स की के द्वारा जब भाषा पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको अपनी प्लानिंग बहुत ही दृढ़, बहुत ही केयरफुली प्लानिंग करनी है, और जो वाक्यों का चयन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। So that means right now we were discussing the Fitzgerald key. That is a very important example of the structure approach, which is a method of teaching language. In this, the very important aspect is to have a very correct grammatical approach for the child. The child has to have very correct grammatical approach, and he has to know the grammar rules very well. And as Shir just showed us, he showed us a 6 division chart, a diagram which was of the Fitzgerald key, and this was a very important aspect. So now we go on to the next thing, that's the apple tree program, which Sir will just explain to us. ना एक बात और है कि फिजल्स की के अंदर ये ज़रूरी होता है कि बच्चे के पास में पर्याप्त शब्द भंडार होना चाहिए। द चाइल्ड शुड हैव सफिशिएंट वोकैबुलरी वाइल ही, तो यहाँ एक चीज़ और आ गई कि वाइल वी आर ट्राइंग टू टीच लैंग्वेज थ्रू फिजल्स की, the child should have sufficient vocabulary, only then he'll be able to fix those words into the slate, into that table. Now the next program is Apple Tree program. The Apple Tree program was the joint effort of 5 teachers at Lova School for the Deaf. These teachers used this structured approach for teaching English language. The program focuses on development of 10 basic sentences, 10 basic sentence patterns as a foundation for a deaf student's language base. तो ये लोवा स्कूल के 5 अध्यापकों ने इंग्लिश भाषा के अंदर 10 वाक्य सांचों का, 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लिया, 10 वाक्य लिए, और उन्होंने कहा कि अगर हम इन द बिगिनिंग इफ यू कैन डेवलप दिस 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, द चिल्ड्रन विल बी एबल टू लर्न लैंग्वेज फास्टर. The program is designed to present through a sequential spiraling system, that is, single element to be learned are to be presented in small sequential steps and reinforced in the subsequent lessons. Meaningful vocabulary base is prerequisite to start the Apple Tree program. Now, as we have talked in the principle from simple to complex, now here also they have followed the same thing. They started with simple sentences and then spirally built on extending the sentences to a more difficult situation. तो यहाँ पर भी उन्होंने पहले क्या किया कि पहले एक बहुत साधारण वाक्य लिया, छोटा वाक्य लिया, और फिर उस वाक्य को उन्होंने आगे बढ़ाते गए और स्पायरली उसको हम बढ़ाते गए. अगेन द सेकंड थिंग इज दैट
sufficient vocabulary is a prerequisite to start language teaching or language learning through this program. Now, in this, I have given this 10 language patterns. The first is noun phrase, then verb, then adjective. Now, it says the bird is black. The second is again a noun phrase, a verb and where. Now, if we want to put these sentences in that slate, it's very very easy. अगर आपने वो स्लेट नोट किया है और ये वाक्यों को भी नोट कर रहे हैं, तो इन वाक्यों को एज ए टीचर आप उन स्लेट्स में रख करके देखना क्या आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. देन द वर्ड इज ऑन द ट्री. वेयर आ गया यहाँ पर, कहाँ है. द वर्ड इज अ क्रो, नाउन फ्रेज, अ वर्ब फ्रेज. देन द bird can eat, noun phrase, verb phrase, where. The bird can eat outside. Noun phrase, verb phrase, where and when. The bird can eat outside every morning. Then second pattern में आ जाता है noun phrase, verb phrase, again a noun phrase, subject, verb and object. The bird can eat worm. The bird can eat worm in the grass. Where? The bird can eat worm in the grass every morning. The mother bird can give baby worm, a baby worm. So now here we have got two noun phrases at the end. Now out of this, which is the object? The object is a worm. So if the child does not have the basic vocabulary, then he will not be able to fix those words into these sentence patterns, or he will not understand the meaning of the sentence. So if we are teaching language through Apple Tree program, the children should have sufficient vocabulary of English language. So that means the Apple Tree program can, in other words, be also described as an extension of the Fitzgerald key, as we had the six divisions. No. It means there are two different programs. The Fitzgerald key is not dependent on a particular sentence structure. Now we can have any number of structures in there. वहाँ पर हमारे पास में कोई भी वाक्य हो सकता है, हम उसको वहाँ लिख सकते हैं, उस स्लेट में लिख सकते हैं, फिज़र्स की में लिख सकते हैं. मगर एप्पल ट्री प्रोग्राम जो है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन 10 इन द बिगिनिंग. टू बिगिन विद देयर आर ओनली 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थ्रू विच द लैंग्वेज इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन. So there are two independent programs. The Fitzgerald key has got nothing to do with the Apple Tree program, or Apple Tree program has nothing to do with the Fitzgerald key, but what is common, that the basic vocabulary is a prerequisite for both. Vocabulary cannot be taught through these programs. Okay. So that means the Apple Tree program and the Fitzgerald key are two different aspects of the structural approach, and they are both the methods of teaching language. So we were right now discussing the methods of teaching language. Our topic of discussion will continue after a short break, as it's time for a break now. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है, जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन करके ओपन. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप. UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है. ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं. सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है. कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है. असंगत क्रियाएं,
कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से, कप को। वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। Welcome back after the break. Our topic of discussion for today was principles of teaching language techniques to children with hearing impairments. Until now, we were discussing the various methods of teaching language, and we were right now discussing the structured approach. And in this, we had the Apple Tree program and the Fitzgerald key. And now we'll go on to further discussion. Okay, now we'll be discussing, we have already discussed Fitzgerald's key and Apple Tree program. Now we'll be discussing Barry's 5-slate system. The system was devised by Catherine Barry in 1989, and Barry's 5-slate system is a printed system to help hearing impaired children to speak and write systematically correct sentences. Now here also, like Mr. Fitzgerald's key, we have got one key which has got 6 columns. Now in Barry's 5 slates, the key have been divided into 5 small slates and then a final slate in the number 5. So the Barry's method utilizes 5 large slates, each with one column to help children categorize the parts of speech in the sentences. Each slate contains one part of the speech, subject, verb, object, and the verb presentation and the object proposition. The 6th column was also added for adverbial element, as they may shift position in the sentence. Now, as I have said, like in Fitzgerald's key, there was only one slate, and we have to fit in the sentence in that slate. Now, in the Barry's 5 slates, we have got 5 different slates, wherein we have we have got places for different parts of speech, and the child has to identify the parts of speech and put the sentence into the slate. Now we'll go on to the natural method of teaching language to children with hearing impairment. The natural approach maintains that the language presentation should never be done through extraneous material, drill sentences or artificial exercises devoid of personal interest and
entirely outside the child's need for language being taught, the language must be acquired by them not as a lesson but as a meaningful approach to a very necessary, useful and happy way of understanding themselves and the environment. Now, the natural method of teaching language, it maintains that as normal children, the children with normal hearing learns language, the children with hearing impairment should also be presented or taught language in the same way. Generally what we do, we will take a lots of material, models, pictures and sit with the child and try to teach him language. It should not be done. The natural method says that we should not do it like that. Then the development of language should be accompanied by making use of experiences, interests and needs of children as a facilitator of comprehension and communication. The real purpose of language is communication, and that for children with hearing impairment to understand the purpose, they must be exposed to language through communication. Now, the second thing, what natural method of teaching language or presenting language to children with hearing impairment maintains that the basic use of language is communication. I mean, we use language for communication, and if we are able to provide children with hearing impairment language through communication, the children will learn faster and in a natural way. There must be communication between child and the family members, or the child to feel secure, wanted and a part of the family. The same is true for the classroom settings. Agar the children feel wanted or not unwanted in the family, अगर आप अपने घर में माँ के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ जरा ये देखना, माँ कहती है ठहर जाओ, फिर गए आप, माँ जरा देखना, फिर कहती है ठहर जाओ, इट मीन्स बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि भाई माँ तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देती है, ना आई एम अनवांटेड. इट शुड नॉट बी द केस. लाइक मीन्स इफ वी आर ट्राइंग टू टीच चिल्ड्रन लैंग्वेज through natural method, the child should feel that he is wanted. He should be given all support, and the same is true in the classroom. If we don't encourage children in the classroom, the children who are not encouraged or discouraged, or those children who are discouraged, will fall back. The language development should be through communicating in a natural way, making full use of experiences, interests and needs of the child. Now, as I have already said, that the children have got experiences. They experience on their own while coming from home to school, or from going home from school. Maybe at home there might be some party, they have some guests, so they have got some experiences and they want to share it. And if we permit these children to communicate and provide language, that is what natural way is. The principle and practice. Young children with hearing impairment, young hearing children have abundance of experiences accompanied by the wealth of language input. Even with the advantage of background, hearing children are not expected to use expressive language until approximately 12 months after the language experiences begin. And two-word utterances are not anticipated until the child is 20 months old. In other words, the hearing children have about 1.5 years to learn about their environment and receive language information before they begin to use connected language. Now, यहाँ पर थोड़ा सा I have talked about children with hearing, normal hearing. They take nearly 1.5 months to come to 2 words, or 1 year, nearly 1 year to say 1 word. So, during that period, during that 1.5 year, they have got language input from all sources, from mothers, from kids and kins, from family members, from everybody. And after having that much of input, the child is able to say 1 word after a year and 2 words after 1.5 months. Language involves interactions among components, content, form and use. The first principles of language involves interactions among content, form and use, suggested that the language program must be integrated into all the activities during the school days. As these activities during the school days provide natural occasions to use language, the principle further suggested that the vocabulary words should not be taught in isolation and out of natural context, and the syntax and morphological endings should not be taught separately from meaning and meaning use. Now, once again, the language, it is interaction between the form, content and use. So, we while teaching language through natural method, प्राकृतिक विधि से बच्चों को भाषा सिखाते वक्त हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम
फॉर्म, कंटेंट एंड यूज तीनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। एंड द वोकेबुलरी शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन कि हम 5 चीजें यहां लेकर के बैठ गए, केला, सेब, अमरूद, पपीता, और बच्चे को एक एक दिखाते गए और बोलते गए। Now this is what the natural method does not say. Whatever comes the child's way, you be there as a facilitator, and while you are presenting language, keep in mind the form, content and use. अभी मैंने देखा है क्लासों में बच्चों को एक वचन से बहुवचन बनाना सिखाते हैं, तो वो एक सिंपल एक्सरसाइज लेते हैं, मगर नेचुरल मेथड कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमको कॉन्टेक्स्ट में जहां भी आता है वहां पर उनको मॉर्फोलॉजिकल एंडिंग्स लगा करके हमको बच्चों को सिखाना चाहिए। द सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स आर इनसेपरेबल एंड लैंग्वेज ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन syntactic structures are embedded in semantic intent and beginning language intervention should not be presented separately or isolation. Now, व्याकरण और अर्थ, सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स, ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। Now, once the child is on 2-word sentences, now he says Papa toffee. Now, what is the intent? What is the meaning? He wants Papa to bring a toffee, or he wants to give Papa a toffee. Now, ये हम अलग नहीं कर सकते. The syntax and semantics cannot be separated. So, while we are presenting language through natural method, we should keep in mind that the language is semantically and syntactically correct. When presenting language activities to young children with hearing impairment, the teacher should be aware of syntax in the child's utterances and can determine the syntax structure, e.g. subject, verb, object. Goal for facilitating language learning must take into consideration both the context and which the content form interaction are used. This is the situation in which children speak or sign and the purpose or the function for which they speak or sign. Now again, the second thing is, while we are presenting language through natural method, we have to keep in mind that what type of syntax, बच्चा किस प्रकार के grammatical वाक्यों का प्रयोग कर रहा है. Now, if he says mummy papa, so the teacher or the presenter has to fix in a verb in between. मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आओ, मम्मी पापा दो, whatever. तो उस मैंने यहाँ हिंदी में एग्जाम्पल दिया, मगर जो यहाँ एग्जाम्पल था वो अंग्रेजी का था, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किया गया, वो जो अंग्रेजी का है। मगर हमारे यहाँ जो भाषाएं हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है वो ज़्यादातर भाषाओं में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का रहता है, इसीलिए मैंने वो दिया। और इसी प्रकार से तो जो बच्चे की सिंटेक्स है, व्याकरण, बच्चे की भाषा में जो सिंटेक्स है वो हमको ध्यान में रखना है और वो हमको बोलना है, उसी के अनुसार हमको भाषा प्रेजेंट करनी है। नो, यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि एवरी टाइम द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू स्पीक, ही मे साइन। तो वो साइन में भी क्या उसका सिंटेक्स है, किस चीज के लिए, किस ऑर्डर में वो साइन कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको बच्चे को भाषा प्रेजेंट करनी है। द टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन in hearing children and must plan experiences in classroom that will encourage the use of appropriate pragmatics and semantics elements. Now, हमारे पास में हर एक चीज के पैमाने हैं, लाइक बाल विकास, कब बच्चे की गर्दन ठहरती है, कब बैठना सीखता है, कब चलना सीखता है। इसी प्रकार से लैंग्वेज, भाषा और वाणी के भी विकास का है कि पहले साल में क्या सीखता है, दूसरे साल में क्या सीखता है, तीसरे साल में क्या सीखता है। तो जो लैंग्वेज टीचर है, ही शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विद हियरिंग। नॉर्मल हियरिंग चिल्ड्रन जो है उनमें उनकी भाषा किस प्रकार विकसित होती है वो उसको मालूम होना चाहिए। तो उसी के अनुसार वो द टीचर विल बी एबल टू प्रेजेंट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू, विल बी एबल टू प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कि इस उम्र में बच्चे को ये चीज़ें आने चाहिए, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, तो वो उसी के अनुरूप भाषा बच्चों को प्रेजेंट कर सकेगा। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टू चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, द प्रीरिक्विजिट इज इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द बेसिस फॉर डिटर्मिनिंग लैंग्वेज गोल्स, बोथ conceptual and linguistic development occurs
in an orderly sequence, and each step in development is important and influences the subsequent stage. The natural approach to language learning is developmental, and the child language behavior or production nor chronological are used in determining the language level. Intervention strategies are planned according to the language level of the child. Now here also the language, the teaching of language to children with hearing impairment, the prerequisite is information about normal language development. Agar if the teacher doesn't know what is the language development, कि बालक में भाषा किस प्रकार विकसित होती है, तो वी कैन नॉट प्लान कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट लैंग्वेज टू द चाइल्ड in front of me. And the third principle is of teaching language to children with hearing impairment is the language is learned through communication. Parents do not plan and design language lessons and activities to language to their children. Rather, children acquire language comfortably and easily in social settings and in an unconscious manner. Young children acquire language because mature language users communicate with them. Now the third principle says, अभी एक माँ अपने बच्चे से बात करने के लिए कभी योजना नहीं बनाती है. शी नेवर प्लान्स कि मैं अभी उनसे ये बात करूँगी, अभी मैं ये बात करूँगी, अभी मैं ये बात करूँगी. बच्चे के सामने जो कुछ भी आता है अकॉर्डिंगली वो बात करती जाती है. तो ये थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि सिमिलरली द टीचर शुड बी ए फैसिलिटेटर फॉर चिल्ड्रन टू लर्न लैंग्वेज. अर्थात टीचर को भाषा प्रेजेंट करनी चाहिए. वो जो भी बच्चा कर रहा है उसके साथ में उसकी कमेंट्री करनी चाहिए, जस्ट लाइक व्हाट अ मदर डज. तो इसी प्रकार से मतलब द चाइल्ड विल लर्न लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेशन. One of the studies in psycholinguistics conducted by Brown and Bailogi described that three processes in acquisition of language that occur as very young children and their mothers communicate. The three processes include children imitation as response to the adult's utterances, adult expansion to response to children's utterances, and the process by which children introduce regularities and rules of language from language information they receive. भी तीन बातें यहाँ हुई. नंबर एक, जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, what we say, what the mother says, the child repeats. Once the child, say the mother is playing with the ball, she narrates, ball है, ball goal है, the ball is roll, I am rolling the ball, ball has gone there, ball is under the table. Then ultimately she asks the question, what is this? The child says this is a ball. Ball को उसने repeat किया. Repeat करने के बाद में then we expand. The ball is red, the ball is green, the ball is small, the ball is big. And then the process by which children include regularities and rules of language. And gradually the child start learning the rules of language. That the first rule he learns or she learns is that there has to be an object, a verb and a subject. And this is how the process goes. Communication plays an important role in young children's life. Communication facilitates bonding process between mother and infant. It enables young children to learn and communicate what is the purpose and need to desire to communicate. The people in their environment motivates young children to begin the process of language learning. Now in case of children with normal hearing, the mother talks to the child, she responds, she plays a dual role. She speaks for the child and then for herself. And similarly, like which the child get to know the use of language and communication. And this is how the process of learning, language learning goes on. Okay, so our today's topic of discussion was principles of teaching language techniques to children with hearing impairments, and we discussed various things like the balance between the various aspects, for example, planning and spontaneity, homogeneity and heterogeneity, then flexibility and rigidity, and assessment and instructions, and various other aspects as well. Then we discussed the various techniques of teaching language like oral, description, explanation, questioning, play, activity, etc. Then we discussed the methods of teaching language, for example, the structured method approach, and then there was also a natural approach. Then we went on to discussing the principles of teaching language. So this was all about our discussion today. I hope our viewers found our useful information. And for any kinds of feedbacks and suggestions, please get back to us on our numbers and on our email ID. And that's all for today. We'll see you on the next show at the next time. Thank you so much for joining us. Thank you.